अच्छा डॉक्टर हिना, बेसिक चीजें तो सबको पता ही होती हैं, लेकिन फिर भी इफ यू कैन ब्रीफली टेल अस थोड़ा सा कि कितने टाइप्स की एक्नी होती हैं, क्या मोस्ट कॉमन एक्नी होती है, किस वेदर में ज्यादा आता है वगैरह, एंड देन विल जंप ऑन टू मोर इन डेप्थ क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक। ओके, एक्ने के stages होते हैं। एक माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है एंड सिवियर होती है। एक्ने आपको हर सीजन में मिलेगा, चाहे समर है, चाहे ऑटम है, चाहे विंटर है, चाहे स्प्रिंग है, और हर एजेस में मिलेगा आपको। इवन न्यू बॉर्न्स में भी एक्ने होता है, बच्चों भी होता है, टीनेजर्स में तो बहुत कॉमन है, हमारे अडल्ट में भी होता है, 20s 30s 40s 50s, हर एजेस में एक्नी होता है। अच्छा, एक तो मैंने आपको माइल्ड मॉडरेट सिवियर एक्नी बता दी। एक दूसरी स्टेज जो एक्नी की होती है वो होती है उसको हम कहते हैं मैक्यूलर पैप्यूलर सिस्टिक एंड नोड्यूलर एक्नी। ये भी एक स्टेज होती है एक्नी की। तो इसमें जो है हम क्लासिफाई इस तरह कर लेते हैं, जो कि छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं हमारे चेहरे के ऊपर, और छोटे छोटे पस्ट्यूलर एक्नी बनती है हमारे चेहरे के ऊपर, और एक एक्नी होती है जो कि नज़र नहीं आती, वो स्किन कलर्ड होती है, वो छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स टाइप की होती है, और वो यूजुअली टीनेजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा सो जो डॉक्टर हिना, जो ब्लैक हेड्स कहलाते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्नी राइट, जो आपकी स्किन पे ब्लैक पैचेस हो जाते हैं? दैट इज दैट दैट इज इज आल्सो। कॉमेडो। या Oh, okay. That's. I did not know that. Thank you for enlightening me that. अच्छा, and so जिन लोगों के होता है कि पिंपल्स हट जाने के बाद जो निशान रह जाते हैं, उसको किस तरह केटर किया जाता है? सो उसको हम इस तरह केटर कर सकते हैं, हम विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं उसके ऊपर, हम उसके ऊपर कोजिक एसिड लगा सकते हैं, हम उसके ऊपर ट्रांसमीन लगा सकते हैं, हम उसके ऊपर रेटिनॉइड लगा सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो वो जो रेड निशान है वो चला जाता है। ओके, दैट्स अच्छा। और ये जो आजकल दीज सम जो पॉपुलर ब्रांड जितने मैंने सुना है, बायोडर्मा, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स, तो ये कितना आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, कितना हेल्पफुल है, या डू यू रिकमेंड मोर टुवर्ड्स होम रेमेडीज? आपका क्या सजेशन होता है इनके बारे में? होम रेमेडी, एक नो नो फ्रॉम माय साइड। Recommend home remedies. Bioderma is a good brand. I recommend Bioderma for my patients, but the other brand that you just mentioned, I don't personally use it. अच्छा, वो ये होता है कि जो ब्रांड मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ, आई रिकमेंड दोज थिंग्स टू माई पेशेंट्स। तो जो ठीक है। चीज़ें मैंने खुद इस्तेमाल की होती हैं, आई डोंट गिव दोज प्रोडक्ट्स टू माई पेशेंट्स। तो Oh, I have never used it myself. तो And आप कौन से मोस्ट आई थिंक जो ज्यादा इफेक्टिव ब्रांड्स हैं जो लोगों को एक्चुअली यूज करना चाहिए, वो थोड़े सा आप बता सकते हैं इफ पॉसिबल? so Bioderma is a good brand. ठीक। People use that, and Neutrogena has good products. ठीक है। Neutrogena क्या आप देखते हैं, and जो other brands हैं, तो फिर वो तो फिर I just give my prescription वाले products ना। Yeah. अच्छा, डॉक्टर ना, हमने वेदर पे तो बात कर ली कि वेदर इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्नी के। हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी होती है, कभी मिट्टी इतनी हो जाती है, तो इसलिए हो जाता है एक्नी। बट इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हैं एक्नी के? एक्नी के इसके अलावा ये देखें, पहली बात तो ये एक्नी होती क्यों है। एक्नी इसलिए होती है, 4-5 वजूहत होती हैं एक्नी के होने के। एक्नी बेसिकली आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो एक वजह जो आपके फेस के ऊपर एक्नी होती है। अच्छा, एक्नी नॉट इट्स जस्ट नॉट ऑन द फेस, आपकी एक्नी आपके बैक के ऊपर भी आ सकती है, आपके चेस्ट के ऊपर भी आ सकती है, आपके ये आर्म्स पे भी आ सकती है, सो आपकी बॉडी पे भी आ सकती है। सो इट्स जस्ट नॉट ऑन द फेस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर बॉडी। तो आपके दूसरे एरियाज ऑफ
parts of the body पे, आपके buttocks पे भी आ सकती है. All these areas are included in acne. People just think it's on the face, but that's true, but these other areas are also included. Yeah. So Okay, so and there सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें जेनेटिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? yes, genetics also plays a part in acne. अगर आपके मदर को या फादर को या किसी और आंट या अंकल को है तो आपको you're also prone to getting acne. That is, I've been a sufferer of acne myself, so I know how when patients come to me, the girls come to me, they're like वो बहुत परेशान हुई हुई होती हैं, उनकी अम्माएं बहुत परेशान हुई हुई होती हैं कि हमारी बेटी को acne है and इनको आप जल्दी से ठीक कर दें. So I know how much stressed they are, how the girls are stressed, how the mothers are stressed, and they're like मेरी बच्ची की शादी है, आप इसको जल्दी से ठीक कर दें. So it is very stressful. बच्चियां भी परेशान हुई, उनके साथ साथ उनकी माएँ भी परेशान हुई होती है. Sometimes the fathers also come along and they're like हमारी बच्ची को बस आप जल्दी से ठीक कर दें. And some of them, they just come like a month before their marriage, and that's like a very big challenge to treat that. एंड आई थिंक आपको स्किन केयर के साथ बहुत कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है. इफ यू आर नॉट रियली फॉलोइंग अप विद योर ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको एक्नी को जाने में, राइट? That's true. Even if your acne is gone, like my acne is gone, but I do sometimes get acne because before your periods you break out. एक आध दाना हो जाता, that's normal. हर इंसान को होता है. अगर हो गया so just don't think कि हल्ला हमें एक इधर हो गया, कोई बात नहीं. हर एक को होता है. I always tell them कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके, हर एक को होता है, नॉर्मल है. अब ये नहीं है कि आपकी एक्नी खत्म हो गई, यू जस्ट स्टॉप अप्लाइंग ऑल द थिंग्स दैट यू वर अप्लाइंग. एक अपनी रूटीन बनाए, आप कंसिस्टेंट रहें. आप यू हैव टू कीप ऑन मेंटेनिंग योर स्किन. देयर लाइक भाई अभी तो आपने बोला हमें पूरी जिंदगी करना पड़ेगा ये. No, you have to take care of your skin. It's just like, if you've lost weight, I always tell them, you've lost weight and you keep on eating, you're going to gain the weight back. तो दैट्स द वे इट इज. मतलब अल्लाह का शुक्र आपकी स्किन ठीक हो गई, तो आप उसी तरह अपनी स्किन को मेंटेन रखें ना. आई मीन इफ यू आर नॉट टेक केयर ऑफ योर स्किन तो वो इवेंचुअली तो खराब हो जाएगी ना. दैट्स द वे. अच्छा अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस ले लूं फ्रॉम द ऑडियंस. अच्छा डॉक्टर हिना, दिस कवल फरूक, शी इज आस्किंग माय डॉटर इज 14, शी इज हैविंग एक्ने ऑन हर फेस, दोस एक्ने आर लीविंग स्कार्स, व्हाट शुड आई डू? ओके Kawal, what you need to do is you can apply vitamin C serum on your face. There is this very nice vitamin C by the name of Acne C10. It's easily available in the market, and you can take that and you can apply it daily at night on your face. ओके ठीक है. अच्छा दिस सवेरा आस्किंग मीसो बोटॉक्स रिपीट होता है? I'm not sure क्या what that होता is. Miso Botox. Is that है? something? Yeah, it is. Okay. तो Okay. क्या होता She's just asking कि is it वापस हो सकता है Miso Botox? है? Can repeat music, definitely. सही है. Isha is asking how to treat melia, if I pronounced it right. Okay. So melia के लिए भी ये है कि you can apply retinoids on your face, Okay. and if they don't work after some time, you come into the clinic and we take them out. ठीक है. Amal is asking, is it safe to start isotretinoin, if I pronounce that right? Isotretinoin, if that's the pronunciation. Why start isotretinoin? I mean, is she like she has acne on her face, or she's just starting like for a skincare routine? What is the reason behind it? Okay, Amal, if you can let us know the reason, Dr. Hina can answer that for you. Acha, Kashmiri is asking, she needs tips for tired and puffy skin. What can she do about that? She needs to drink plenty of water for tired Okay. and puffy, and she needs to rest well. She needs to sleep 8 hours at night. Stress कम ले. I think वो तो
एक चीज है जो नहीं जा सकती बिल्कुल भी, बैक माइंड वो रहती है, because I mean Yeah, I I think I drink like um मैं 900 ml की 3-4 बार बॉटल्स पी लेती हूँ and still my face is like breaking out, I don't know why. तो अब मुझे it's समझ नहीं आता, so yeah. अच्छा वो ये भी पूछ रही है, also could you suggest a non greasy moisturizer? yeah. You can use a skin aqua moisturizer. ठीक है, but you can use skin moisturizer. अच्छा, there's someone asking forehead पर बारीक बारीक acne के डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन स्कार्स नहीं जा रहे. स्कार्स नहीं जा रहे तो आप भी विटामिन सी लगाएं, एक्नी C10 सीरम रोजाना रात में लगाएं. अच्छा, अगर आप दिन में लगाना चाह रही हैं विटामिन सी सीरम, ऑलवेज फॉलो इट विद अ सन ब्लॉक. ठीक है, सही है. ठीक है. Also, Doctor Hina, if I'm wrong, please correct me. How much contribution is for women? Basically, I have this question. How much contribution does makeup contribute to our acne? Is that one of the reasons जिससे आपकी acne बढ़ सकती है? And not इट डज. washing after you come from an event or something like that. Does it play a huge role? Of course, it definitely does, because you're sleeping with the makeup and you're not removing it well, it clogs your pores. And if your clogs are clogged, you tend to break out. So please remove your makeup well, double cleanse, and then sleep. Please do not sleep with your makeup on. And also, I'll add another thing: wash your makeup sponges, wash your makeup brushes at least once in a week. Please do that. Acha, also, is acne something that can lead to complications in your life? Is this something major? Because मैंने इतना कुछ सुना नहीं है acne की complications के हवाले से, तो if you can shed a little light on that also. Acne can lead to depression. That's a major complication. I did not know that. तो no, what I'm trying to say is, for instance, आपको बहुत सारी acne हो गई, आपने इसकी treatment नहीं कराया, let's say, so can it lead to a skin disease of that sort? क्या कुछ ऐसा होता है? या अगर आपने नहीं कराया तो स्किन डिजीज ऐसा तो कुछ नहीं होगा, बट देन इवेंचुअली इट्स गोइंग टू लीव स्कारिंग ऑन योर फेस, राइट? बहुत खड्डे पड़ जाएंगे आपकी स्किन पे, और जैसे जो स्मूथ स्किन है उस तरह से आपकी स्किन नजर नहीं आएगी ना. तो जैसे खड्डे 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 खड्डे, तो it's not going to look like a normal smooth skin, and then eventually you will have to get so many procedures done on your face, and then वो cost effective भी नहीं रहेगा. तो जब आपको acne हो, so please come and consult a dermatologist, ताकि उसी वक्त आपकी treatment हो जाए और इतना आपको खर्चा भी नहीं हो, और इतना आपको mentally भी आप torture में नहीं रहें कि आपकी skin इतनी destroy हो गई है. And that's a lot of pain mentally and money wise भी. ठीक है. Just to add here to everyone's watching, obviously अगर आप लोग कोई skin के issues हो रहे हैं, please आप लोग डॉक्टर हिना से कंसल्ट कर सकते हैं. and if you need any sort of medicines for that, you can always download Find My Doctor's app, और उसमें आप medicine मंगवा सकते हैं और हम आपके घर पे वो deliver भी कर देंगे. We have one more question from Amin Musfira. She's saying, I am having accurate since last 1 month and I use Atpaco on my acne recommended by a doctor. Please add something. Am I going right? So, if you understand what she's trying to say, I think she's trying to ask if this procedure that she's doing, is it right or not? She's She's saying she's having it since last. she's having Accutane and Adapco on my acne. That's fine. It's fine. ठीक है. अच्छा, someone asked, can you please guide how can I stop oily skin? How can you stop? So you need to you need ये बहुत you common. need yeah you need to use you can use Skin A cream, a pea size amount, on your face daily. And okay, that's basically retinoid. ठीक है, एक पी साइज अमाउंट आपने लगाना है रोजाना रात में, और उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर लगा लेना है अपने फेस के ऊपर. It might
purge a little in the beginning, but आपको कुछ टाइम लगेगा अपनी स्किन को सेटल होने के लिए, and then eventually your skin is going to not remain as oily as it is. Yeah. Cool. Acha, one more question from Kashmiri. Is detox water actually helpful for skin and metabolism? It is actually a little bit of lemon, a little bit of mint, a little bit of cucumber. It's healthy, so you can have it. Okay. Also, Dr. Hina, just referring to my recently newborn nephew. So he had a lot of baby acne as we speak on his face, on his chest, and so अब वो चली तो गई over the time, but it has left rashes on his body, like लाल मतलब धब्बे हो गए हैं. So you know what I mean? तो वो उसकी क्या treatment होती है? Because baby products में तो आपको बहुत careful भी रहना पड़ता है, right? So if you can guide a little bit about that. How old? He is 2 months. ओके जो बेबी को जो एक्नी होती है और जो धब्बे रह जाते हैं दे विल गो एक्चुअली इन 3 months, सो इट्स बेटर नॉट टू अप्लाई एनीथिंग ऑन बेबी स्किन. या जस्ट लीव इट एज इट इज. And when it comes to babies, is there any product that you recommend the most to our audience? Yeah, you should use Aveeno. They're really good products. ठीक है जी. So we have one more question. What's the correct age to start retinoid? I am using Neutrogena wrinkle cream. It has retinoid, but it makes my skin very dry. Not overall, but in patches. Okay, so there is no correct age to start retinoid. So it basically depends if you have acne or if you don't have acne. If you have acne, so you can start at a very earlier age. अगर आप teenager हैं तो आप उस age पे भी start कर सकते हैं retinoid, like let's say 13, 14. And if you don't have acne, so you can start the retinoid even at 20. So there is no set age to start retinoid. And if you have like dry skin and you're applying the retinoid cream around your eyes, please apply a moisturizer. Whenever you're using retinoid, please apply a moisturizer after using retinoid. That's the ठीक trick. है. We have a question. Any permanent growth for inner growth nail? I think they're trying to ask the treatment, I'm assuming, from Wahid. Any permanent, I think, treatment for inner growth nail? Treatment for growth nail. Okay, so there is a way of cutting your nail. So don't always cut it in like, a circle, in a circle form. Always cut it in like a straight way. कि आप अगर straight way में काटेंगे तो ये circle edge आपका अंदर नहीं जाएगा. जब अंदर नहीं जाएगा तो आपका nail जो है वो inside से grow नहीं होगा. That's one way to avoid ingrowth of the nail. अब जब ये ingrowth of the nail हो गया है, so there is only one way you have to get it removed. That's scary. surgical. That sounds really scary. Actually, we have one more question from Uruj. Niacinamide serum is good for skin? Well, if you're talking about the ordinary niacinamide, that is the only Yeah, ordinary. for this. So I don't prescribe ordinary. I'm not an ordinary prescriber, but so many people have asked me. Or is that I because just you are not a fan of them? no. I'm not a fan of ordinary, Oh, to okay. be honest. And but I have used niacinamide with other brands, and as in I have used niacinamide in my moisturizers, and it's worked well. Yeah. Okay. So we have one more question from Fakhar. How much and how often can we use sunscreen? Recommended SPF. Okay, so the sunscreen should always be like 50 plus sunscreen आप use करें. ठीक है. Any face, एक second, let me just see one more. Yeah, good face wash for dry and sensitive skin.
Okay, so any face wash which does not have a scent in it, like you can use Dermaxil face wash. That is a nice face wash. It's not even that expensive. So this face wash good for acne and open pore skin? Because that's another question that we have. No, it's not. For acne and open pores, my favorite face wash is Acne. Acne. Yeah, you Sorry. Amal is saying CeraVe is also really good. they're very good. Yes. ठीक है. I think that's mostly that we have for today. It was very informative session, and Dr. Hina, if you'd like to add anything for our audience related to skincare, related to acne, please feel free to do so. Okay, so you should always have your AM and PM routine. For the AM, whenever you wash your face in the morning, you should moisturize it and also apply a sunblock. So these three things you should have set in routine. If you have oily skin, make sure you have a face wash which has a salicylic acid in it, or it should have mandelic acid in it, either one of the two in it. And then you should have a moisturizer. If you have an oily skin, you should have like a a very light textured moisturizer which I just mentioned. You can use Skin Aqua moisturizer. And for the sunblock, you can use Spectrum SC gel for the oily prone skin. And for the PM routine, you can use Acne C10 serum, which is a vitamin C serum. And on top of that, you can apply your moisturizer. And for the girls who were asking about the retinoid, you can use a pea-sized skin cream, and on top of that, you use the moisturizer. That's ठीक all. है. Also, can Okay. you just for acne scars, what should everyone use? Because that was one common thing that was asked during the session. Okay. So for the acne scars, there is this really nice cream. You guys can use a small pea size cream of Melacut, by the name of Melacut cream. Just apply that on the entire face. Follow that with a moisturizer. ठीक है Yeah. जी. Yeah, that's I think that's mostly enough. Thank you so much, Dr. Hina, for joining us today. We hope you had a great time talking to us. Thank you everyone for taking out time and listening to our session. We'll be in touch, Dr. Hina, and I guess that's about it. Take care. It was nice talking to you, and thank you so much all the listeners who were there with me. I really enjoyed your questions, and inshallah we'll meet next time. Take care.